अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं वापस आ गई हूँ एक और सेशन के साथ। स्मैशिंग इट का जो सेशन हम करते हैं, आप मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम समर हसन है और मैं एपिफनी की फाउंडर हूँ। और जो स्मैशिंग इट है उसका थोड़ा सा दोबारा से बैकग्राउंड बताऊंगी कि क्यों हम ये करते हैं। सो स्मैशिंग इट इज़ पार्ट ऑफ आवर वुमेन एम्पावरमेंट वर्क दैट वी डू। हमें लगता है कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं आदमियों के मुकाबले में, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। और जितनी उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉन्ग विद वर्क, वो भी बहुत सारी होती हैं। तो उनको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें फीमेल रोल मॉडल्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि दे कैन सर्व एज रोल मॉडल्स, एज इंस्पिरेशनल पावर हब्स, ताकि लोग उनको देखें और उनसे सीखें एंड दे कैन ब्रिज द गैप दैट एग्जिस्ट इन जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान। सो ये छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है जो हम करते हैं। और हर दफ़ा की तरह हमारे पास कोई ना कोई पाकिस्तानी खातून होती हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया होता है अपनी फील्ड के अंदर, शोहरत हासिल की होती है या सक्सेस हासिल किया होता है। और एंड व्हाट वी लाइक टू डू इन दिस सेशन, हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, उनकी जर्नी के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कामयाब तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया। सो यू नो दैट्स जनरली द जेस्ट बिहाइंड स्मैशिंग इट। अच्छा, आज की मैं थोड़ी सी, अब हमारी जो गेस्ट हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, वेरी ब्रीफली उनका तारुफ कराऊंगी और उसके बाद फिर मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एडिशनल अपना इंट्रोडक्शन दें। तो आज हमारे साथ शनाज रामजी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि स्टारलिंक्स के अंदर काम करती हैं, जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। उनका बैकग्राउंड हेड ऑफ पब्लिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स हेड करती हैं एट हम नेटवर्क, and you know multiple other editorial positions that she's held, author भी हैं बेस्ट सेलिंग बुक फूड प्रिंट्स की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इतने सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं कि आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ द लिस्ट ऑल ऑफ देम आउट। आई थिंक कॉन्वर्सेशन के अंदर ही बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। तो विदाउट मच अडू आई एम गोइंग टू वेलकम हर टू द वर्चुअल स्टेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Thank you for having me here. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। Pleasure. सो आई थिंक यू नो, एक तो आप छोटा सा, मैंने तो बहुत थोड़ा सा तारुफ कराया है, थोड़ा सा और अपने बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या करती हैं। Okay. So, yes, my name is Shanaz Ramzi. I'm CEO of Starlinks PR and Events, which is an event management and PR company, which I established 5 years ago with my son and daughter-in-law. And prior to that, I used to work for Hum Network as their GM Public Relations and Publications. I was with them for 11 years. And prior to that, and all throughout this journey of being the CEO and being the GM, and even before that, I have been a freelance journalist. That is my passion. That is what I love doing, my writing. And so I started my career, I think way back in 1991 as a freelance journalist, writing for a lot of publications, but basically for Dawn and also for some international magazines and newspapers. And to date, whenever I get the time, I still freelance as a journalist. And aside from that, I'm also the president of Women's Chamber of Commerce and Industry, Karachi South, for this year. I'm the charter president of Rotary Club New Central, which I established last year, and the assistant governor for in the Rotary District 3271 for this year. I'm also co-editing the magazine, the district magazine, and twice running since last year. I have been appointed the convener for tourism development by the Federation of Pakistan. So this is the second year that I'm doing that. And I've also recently I'm in the process of launching my own second company, which is a travel company called Travel in PK. So in a nutshell, and yes, you already mentioned I've authored one book and two more books are in the pipeline. One is being published by OUP, that will be my second book by then. And the other is, it's my favorite recipes. So that's also in print. Yeah. तो इतना सारा कुछ कर रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह से, राइट। मतलब इट जस्ट केप्ट गोइंग कि ये भी करती हैं, ये भी करती हैं। दो एक कंपनी रन करना इतना मुश्किल होता है, जॉब भी कर रही हैं, इतनी सारी और वॉलंटरी पोजीशंस भी होल्ड करती हैं। कैसे सब कुछ करती हैं? हाउ डू यू मैनेज? This is something that I've been asked very often.
And I think the only answer is time management. This is something that, when I was much younger, I was in JCs, which is an international youth organization, similar to Rotary, except that it's for younger people. And it's a leadership organization. So it trains you into how to become a leader. And one of the things that we learned over there, aside from doing events and things, was to do time management. I think वो मैंने जो skill वहाँ सीखा है वो that has taken me all the way up till now because if you look at my phone calendar हर आधे घंटे पे एक slot उसमें मैंने भरा हुआ होगा for some meeting or the other, some Zoom session. और ये साल कोविड की वजह से I think I've managed to pack in a lot more activities than I would have otherwise. क्योंकि इवेंट्स कम हो रहे थे या बिल्कुल नहीं हो रहे थे तो मेरे पास ज्यादा टाइम था टू डू ऑल द अदर थिंग्स दैट आई कुड डू जो शायद मैं वरना नहीं कर पाती और as long as you're using every minute of your day productively I think it's 24 hours is a lot of time in a day you can do a lot but as long as you're not wasting it and it's not that I don't relax I relax also लेकिन हर चीज के लिए मेरे पास टाइम स्लॉट्स होते हैं I think that's wise. अगर मैं आपसे पूछूं कि top 3 strategies time management की कभी हम बात बहुत important एक topic पे आ गए हैं because as entrepreneurs as well हमारी बहुत सारी community entrepreneurs भी है और बहुत सारी women की भी है and women के multiple roles होते हैं जो उन्हें manage करने होते हैं. So what would you top strategies that you could share vis-a-vis time management? देखिए टाइम मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रायोरिटाइजिंग. दिस इज समथिंग मैं आपको बताऊं चाहे आप घर में काम कर रहे हो या आप दफ्तर में काम कर रहे हो या आप अपना कोई पर्सनल चीज कर रहे हो आई ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू इन अ डे एंड देन आई डिसाइड दैट ओके दिस हैज टू बी डन सबसे पहले और नॉट जस्ट बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है बट बिकॉज मैं वो चीज करके आई गेट इट आउट ऑफ द वे और फिर जब तक एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जो मैं अपने कुक को हमेशा समझा रही होती हूँ कि भाई तुमने वो चूल्हे पे वो एक चीज चढ़ा दी है अब तुम खड़े हो उसके सामने जब तक वो तैयारी होगी तुम कुछ और नहीं करोगे दैट मेक्स नो सेंस टू मी so for me the thing is that if while I'm cooking something I'm chopping the other stuff so when I'm entertaining I may be cooking 10 dishes and I'm making it all on the same day but and it's all possible मतलब सब मुझे पूछते तुमने 3 दिन से तैयारी की होगी मैं कहती हूँ नहीं भाई मैंने सुबह की है a lot of times मैंने ऑफिस से आने के बाद की होती है but it's only because मुझे सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे अगर स्टेक मैरिनेट करना है तो मैं मैरिनेट करके मैं चली जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं शाम को आऊंगी there's not enough time for marination तो जो काम मुझे पहले करनी है वो मैंने करके उसको आउट ऑफ द वे कर दिया और उसके बाद जो चीजें मुझे पता है कि मैं लास्ट में कर सकती हूँ वो मैंने एंड में छोड़ दिया और वो आराम से हो जाता है पूरा अब आप अगर रखेंगे कि आपने जो चीजें आपको लास्ट में करनी थी आपने पहले तैयार कर ली और जो आपको मैरिनेट करनी थी वो आपने लास्ट के लिए रखी तो आपका हो गया बेड़ा गर्क so that is why you have to learn how to prioritize and how to divide your time properly if you do that everything is bilkul makhan there's no problem then No, I think that's very, very valid and I love the example that you've given as well. क्योंकि मैं काफ़ी हैरान होती हूँ बहुत सारे जो लोग हैं मतलब हर किसी का अपना स्टाइल होता है काम करने का किचन की एग्जांपल ले रहे हैं बट बहुत ज़्यादा कुछ लोग फैला के काम करते हैं राइट और मैं बेशक बहुत ज़्यादा नहीं आई एम नॉट सच अ ग्रेट किचन पर्सन बट मेरा साथ साथ किचन साफ होता जाता है सो बाय द टाइम आई गेट डन अगर कुक अगर फिनिश हुआ है तो एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन आई डोंट हैव टू डू एनी एडिशनल वर्क राइट फिर बस सिर्फ सर्व करना है सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि रन टाइम पे क्या क्या चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं जस्ट प्लान देम अकॉर्डिंगली आई थिंक दैट्स रियली यूजफुल अच्छा लेकिन थोड़ा सा ना अब हम वापस उसके ऊपर आते हैं एंड यू मेंशन्ड कि ठीक है आप इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह स्टेज पे आप कर रही हैं एंड कोविड का भी आपने बताया यू आर एब्सोल्युटली राइट बहुत ज़्यादा टाइम मिला टू डू थिंग्स that were at the back burner या strategy planning और strategic planning इस तरह की चीज़ें वो हमने upfront upload कर दी because we had time. So थोड़ा सा बताइए कि आप इस stage पे पहुंची कैसे जो आपकी journey है ना I want to know more about your story. I wish I could, well, I don't know whether I wish I could, but it always makes for interesting hearing if you talk about your struggles and how you had to deal with it. No, it can be a positive story, trust me. It doesn't have to be a struggle. But for me, it's actually been handed to me on a plate. I mean, I cannot thank God enough because I didn't carve my career path for myself at all. Yes, I was always fond of writing, and that's why I did journalism in the university. My major was journalism.
but I was already married when I did my when I was still in university. So right after I came, when I finished with my studies, I had thought that I will pursue my career. But you live in a joint family system, and then you have kids, and then your priorities begin to change. So I never got down to starting a career at an early age when I should have maybe. And later, when I was still in my 20s, there was a fashion at that time for ladies who were basically sitting at home to do something with their lives and do something creative. So बहुत उस जमाने में exhibitions होते थे, hotels में, 5-star hotels में people used to hold कपड़ों के exhibitions, put अपने designer clothes and things like that. So ये at कौन that से years की आप बात कर रही हैं? this was like 80s में, I Okay. had got married in 1980, and so this was say 83, 84. In the early 80s, वो Marriott used to be the in hot spot, and वो उसके नीचे lobby में रोजाना कोई ना कोई exhibition हो रहा होता था. So my sister-in-law and I had just had our babies, and we are my firstborn, her firstborn, and we were thinking that when we started going looking for things for our kids, लोकल कोई चीज ही नहीं मिलती थी. या तो आप ट्रैवल करें, और उस जमाने में इतने सारे फैसिलिटीज भी नहीं थे, इतने दुकानें भी नहीं थी कि आपको हर चीज अब्रॉड से मिल जाती है या ऑनलाइन आप कर लें. तो कोई चीज लेनी होती थी तो फंस जाते थे हम लोग, बिकॉज कोई खूबसूरत चीजें बच्चों के लिए नहीं मिलती थी. It was amazing. So then the two of us thought that let's do something and let's start creating things for children, and start having exhibitions and things like that. So the two of us, कारीगरी के नाम से हमने एक शुरू किया, जो चिल्ड्रंस एक्सेसरीज एंड नॉवेल्टीज के लिए था. That became a huge hit, और हमने भी बहुत से एग्जीबिशंस की. हमने कराची में भी की, हमने लाहौर में भी की, और ठीक ठाक उसका वो डिमांड हो गया. So my husband used to keep telling me कि तुम पढ़ लिख कर दर्जन का काम कर रही हो, तुम so, why are you wasting your time doing this? And why don't you do what you're cut out for doing, which is actually writing? And I used to keep thinking, but karenge. Then I had this friend of mine who was an artist, and he was in touch with all these newspapers. So he told me that we're Dawn wale dhoondne some person for writing, and they're looking for writers. So तुम चलो, मैं तुम्हें introduce कराता हूँ. तो जबरदस्ती उसने मुझे कहा, तो मैंने एक आर्टिकल लिख लिया on the art of driving in Pakistan, and it was as you can make out by the title, मज़ाहिया article. तो वो मैंने लिखकर और चली गई, and he introduced me to all the sections of Dawn, and मुझे immediately सबने assignments दे दिए, और सबके असाइनमेंट्स भी आ गए. और जो डॉन एक उस जमाने में इवनिंग आता था, स्टार वीकेंड, उन्होंने मुझे डेडलाइन भी दे दी कि 10 दिन के अंदर तुमने आर्टिकल सबमिट करना है, which was like a cover story on the Chinese population in Karachi. तो वो that was basically how I launched my career in journalism, because वो आर्टिकल्स उन्होंने जब दे दिए, और उसके बाद धड़ाधड़ मैं सबको सबमिट करती गई, धड़ाधड़ वो और मुझे देते चले गए. And because I am a stickler for punctuality, अगर मुझे कोई चीज देता है वो उसी टाइम पर मुझे देना होता है, तो वो एक रेपुटेशन भी बन गई कि ये रुलाती नहीं है, टाइम से दे देती है. तो जब भी कोई लास्ट मिनट का भी कोई चीज होता था तो वो मुझे पकड़ लेते थे, and I used to submit it to them. So for years I had become sort of known as the Dawn writer. People used to think I was working at Dawn all the time, instead of just a freelance contributor. And I was writing like an article a day, and I was doing it from the house. And that also people used to think कि यार हम तो ऑफिस के एनवायरनमेंट में बैठ के डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम घर में बच्चे भी हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, सब कुछ है, कैसे करके तुम सब टाइम से डिलीवर कर रही हो. लेकिन आई सपोज पैशन था, करना था तो कर लेते थे. और उसी तरह फिर मेरा फर्स्ट जॉब was handed over to me more or less just like this came to me on a plate. I had gone to interview Sultan Apa for Star Weekend, और जब मैं उनको इंटरव्यू किया और वो जब छपा तो उन्होंने मुझे बुलाया, एंड बल्कि 2-3 दफा मुझे बुलाया कि मुझे तुमसे मिलना है. उस वक्त मैं बिजी थी क्योंकि मैं
डायरेक्टर हेरिटेज फाउंडेशन भी हूँ, तो मैं उनके साथ गई हुई थी भावलपुर वगैरह, हम लोग हेरिटेज पे काम कर रहे थे। और उनका फ़ोन आया कि नहीं तुम आओ, आई वांट टू मीट यू। फिर जब मैं गई तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया फॉर दिस network that they were going to launch. It hadn't launched yet. And they said, she said that I want you to head the PR department over there. मैंने कहा भाई मेरा तो काम लिखने का है, मेरा पीआर का तो मैंने कुछ किया ही नहीं है कभी ना। तो मैं जो जर्नलिस्ट को जानती हूँ वो सब इंग्लिश के जर्नलिस्ट है, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, तो मैं उर्दू जर्नलिस्ट को भी नहीं जानती हूँ, तो मैं किस तरह करूंगी। और फिर दूसरा ये कि मैंने 9 to 5 काम भी कभी नहीं किया है, तो ये ऑफिस एनवायरनमेंट में मैं आई डोंट नो मैं टिक पाऊंगी या नहीं। शी सेड देखो तुम थोड़े देर के लिए आ जाया करो, 2 घंटा 3 घंटा जो भी तुम्हें करना है, मगर तुम आजमा के जरूर देखो, क्योंकि यू विल एंजॉय दिस एंड यू विल डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस जमाने में मेरी बेटी की भी शादी सर पे थी, तो मैंने सोचा पता नहीं मैं किस तरह टाइम निकालूंगी, और मैं घर पे जाके बोलूंगी तो ये सब शोर करना शुरू करेंगे क्या, अब आपको ये भी पालना है, ऐसी कोई कम चीजें आप कर रही हैं, व्हाई यू टेकिंग दिस ऑन। बट जब मैं गई हूँ तो आई हैड अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड एंड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। माय डॉटर, जिसे मैं एक्सपेक्ट करी थी कि सबसे ज्यादा शोर करेगी, उसने कहा कि यू नो दिस विल हेल्प यू इन योर जर्नलिज्म बिकॉज यू विल मीट सो मेनी आर्टिस्ट्स एंड सेलिब्रिटीज, यू विल बी एबल टू राइट इवन मोर, तो आप कर लें। ठीक है। I had absolute nightmares, the first day before I went to work कि पता नहीं मैं क्या करूँगी, and I make a fool of myself. लेकिन और फिर जब I was telling my husband this also, so he said देखो October था at that time, I think it was October 2004 था, and January 2005 में launch हो रहा था channel. So he told me that 3 महीने की बात है, दिसंबर तक देख लो और फिर कह देना आप आपको कि आई एम सॉरी दिस नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर जनवरी से तुम नहीं जाना, जब वो लॉन्च हो रहा होगा, जब हो चुका होगा उस वक्त तक लॉन्च। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं 3 महीने के लिए मैंने आजमाने के लिए मैंने हाँ कर दी। And I was sort of working part-time, not full-time, because my mother-in-law was alive and I used to go back home to have lunch with her. So मैं बस सुबह जाती थी 3 घंटे के लिए, और मैंने 11 साल वहाँ पे किया। So a lot of people 3 महीने जो थे वो 11 साल बन गए। बिल्कुल, a lot of people came before, after me, a lot of people left before me, but I was there, and then I was there right up till 5 years ago when I finally decided to start my own company with my son and daughter-in-law. So then I left them, but as you see, I'm right here in Islamabad in the Hum News office building right now, and whenever they need me, they outsource, and I'm there to help because I still feel it's my home and my family. सो अगेन जो आपकी पूरी कहानी में आप बता रही थी, बहुत आपने अच्छी सी बताई एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये थोड़ा सा बताएं, बिकॉज यू मेंशन दैट ओके लोग भी आपसे पूछते थे, बार बार सवाल पूछते थे कैसे घर बैठ के आप कर सकती हैं, कि इन लॉज भी हैं, बच्चे भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सब कुछ है, और आप डेडलाइंस पे डेडलाइंस मीट करती जा रही हैं एंड यू आर बीइंग सो प्रोडक्टिव एज वेल, राइट? एन आर्टिकल अ डे, इट्स नॉट दैट ईजी, राइट? सो ये व्हाट वर यू डूइंग देन? कैसे आपसे सारा कुछ मैनेज हो जाता था? अर्ली उठती थी, रात को करती थी काम, क्या करती थी? मैं बिल्कुल मैं यही करती थी कि अगर मुझे रात को देर तक जागना पड़ता था तो मैं देर तक जागती थी, अगर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। आपसे जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे सामने एक वो मंजर आ रही है। It was my niece, my husband's sister's daughter had passed away. वो young girl, she was born with some congenital defects, and she was in her early 20s. तो जब उसका सडनली इंतकाल हुआ, उसी वीकेंड को मुझे सबमिट करना था एक कवर स्टोरी फॉर स्टार वीकेंड। तो मैंने फिर आसिफ साहब वाज he's always been my mentor and he was the editor of Star Weekend. तो मैंने और मुझे पता था कि वो बैकअप्स रखते हैं ना स्टोरीज के, तो अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनके पास बैकअप होता है। तो मैंने उन्हें फोन किया कि आसिफ साहब इस तरह हो गया है एंड मेरे लिए मुश्किल होगा ये आर्टिकल देना। The article was on a thesis that Indus Valley के students had done. तो वो मैंने जाकर उनका इंटरव्यू सब कुछ कर लिया था, उसका पूरा वो कर लिया था, लेकिन मुझे बेसिकली हैड टू राइट इट ऑल आउट। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा करना।
मैं दिन भर अभी यही हूँ और फ्रेंड फ्रेंड भी नहीं है मेरा, विद माय सिस्टर इन लॉ द होल डे। तो अगर आप कोई बैकअप यूज कर लें। ही सेड कि प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिकल सब्जेक्ट है, अगर कोई और चीज होती तो मैं छाप देता, लेकिन ये अगर अभी नहीं डालेंगे तो नेक्स्ट वीक विल बी टू लेट, बिकॉज ये इनका तीसरा है, तो जाना तो अभी है। और जर्नलिज्म का नाम ही यही है कि द शो मस्ट गो ऑन, जो भी है आपने करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फिर द होल डे आई वाज देयर ओनली। रात को हम घर गए, रात को फिर मैंने बैठकर शुरू किया आर्टिकल, और फिर जब तक दिमाग चल रहा था रात को मैंने काम किया। उसके बाद मैं सो गई। मैंने सुबह 5 या 6 बजे का अलार्म लगाया और फिर मैं उठकर एंड आई कंप्लीटेड दैट पीस एंड आई सेंट इट एंड इट वाज पब्लिश्ड। सो ये होता है कि अगर आपने प्रोफेशनली कोई चीज काम करनी है, कोई कमिटमेंट के साथ करनी है, तो आपने करनी है, चाहे जो भी हो जाए। This is what तो I मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछूंगी। नो एब्सोल्युटली, बट आई थिंक एक फॉलो अप क्वेश्चन भी जरूरी है, बिकॉज टू डू दैट यू हैव टू हैव दैट सपोर्टिव एनवायरनमेंट अराउंड यू, जो आपने शुरू में भी मेंशन किया था। तो वो थोड़ा सा बताएं कि कौन आपके सपोर्टर्स, मेंटर्स, एडवाइजर्स, फैमिली मेंबर्स। ज़ाहिर है किसी फैमिली में डेथ हो जाए और वो भी इतने करीबी, राइट, एंड ऑल्सो ऑन द इन लॉ साइड। तो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, या जस्ट जनरली व्हाट डू यू फील कि आपकी लाइफ में किसने रोल प्ले किया, and what advice would you have for other young people? देखिए, for women in our माशरा, it's very very important that you have a supportive family. If you don't, it becomes very difficult. And with me, my husband has been very supportive, and but then it's a two-way street, अगर मैं उस वक्त जिद पे अड़ जाती कि अच्छा ठीक है मुझे तो ये आर्टिकल करना है, मैं तो जा नहीं रही हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, या मैं मेरा work is important and I have to be just at home and have to do it. So there wouldn't have been that kind of support either from him or from my in-laws or from anyone. You have to give. It's a give and take relationship. That whole day I was there. Nobody even knew I had a deadline on my head that I was worried about. मैं जब रात में गई हूँ, and after my husband must have gone to bed because we were all exhausted. We were there the whole day. So mentally, physically, it was a very taxing day for all of us. I sat down at that time, और उस वक्त मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, वो कंप्यूटर हमारे पास वो जो पीसी का होता था, वहाँ पे बैठकर वो जो एक शेड कंप्यूटर होता था सबके पास मेन सेंट्रल जगह पे, और फिर अंधेरे बिल्कुल करके एक लाइट से वो डिस्टर्ब ना हो, तो अंधेरे में बैठकर पूरा वो रात को करना, फिर अपने लिए अलार्म लगा के फिर वापस बैठना, तो किसी और को इनकन्वीनियंस ना करना। It has to, you have to do that as well. You can't just say कि भाई you have your priority, so you have to do it. तो इस तरह मैंने भी वो कोशिश की, लेकिन सपोर्ट जाहिर है कि आपको मिलना जरूरी है, because there were lots of times when I had to go places because to cover things, और बहुत दफा मजे भी होते थे क्योंकि चीजें जो अब I had become gained a reputation for being a reviewer of restaurants. वो लोग बहुत, उस जमाने में डॉन का रिव्यू मैगजीन आता था, उसमें एक सेक्शन हमेशा होता था ईटिंग आउट, और उसमें वो रेस्टोरेंट रिव्यूज आते थे जो बहुत ज्यादा मैं लिख रही होती थी। तो जब अब मैं जाहिर है कि कहीं जाऊंगी खाने के लिए, तो मैं अकेले तो नहीं रिव्यू कर सकती हूँ, तो मैं आई यूज्ड टू टेल माय फैमिली के साथ चलो, तो सब अपने वो कर रहे होते थे एक्सपीरियंसेस के, अच्छा ये डिश अच्छा नहीं है, ये डिश ऐसा है, ये वैसा है। अच्छा, बाद में मुझे सब कहते थे तुम्हारे तो बड़ा मजे का काम है, मुफ्त में खाना खा रही होती हो मुझसे। मैं कहीं पे भी मैंने मुफ्त का नहीं खाना खाया है। मैं जब भी जाती थी और वो लोग मुझे वो असाइन किया जाता था कि आपको ये रेस्टोरेंट का रिव्यू करना है, एंड वो अगर वो रेस्टोरेंट वालों को पता होता था तो वो कहते थे कि आप मुझे पहले से बता दीजिएगा कि आप कब आने वाली हैं, ताकि और मेरा ही होता था मैं कभी भी नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे आप अलग से कोई ट्रीटमेंट देने वाले हैं तो फिर तो इट्स नॉट अ फेयर रिव्यू। of course it's not a fair review. एंड सो मैं बाकायदगी से छापा मारती थी, कभी भी मैंने नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ रिव्यू करने के लिए, और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डिडंट recognize me or know who I was, क्योंकि वेटर शेटर होते थे, वो तो ओनर्स वगैरह होते नहीं थे उस वक्त वहीं पे ऑल द टाइम मौजूद।
और फिर जब मैं लिख लेती थी छप जाता था, उसके बाद फिर अगर मैं कभी सेकंड टाइम आती थी तो वो लोग रिकग्नाइज कर लेते थे, लेकिन बताकर मैंने कभी भी मैं नहीं गई। तो मैं हमेशा हंसती थी कि सुनो, मुफ्त में नहीं होता है, वो मेरी जेब से जितना मुझे नहीं है ना आर्टिकल का, उससे ज्यादा मैं खर्च कर देती हूँ चार लोग खाने। बट अगेन आपकी जो स्टोरी है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप उसमें मिला लेती थी अपनी फैमिली को, तो यू गेट टाइम टू स्पेंड, यू आर डूइंग द वर्क, ऑफ कोर्स यू नीड टू डू द वर्क, बट इन अ वे यू एंगेज्ड द फैमिली बिल्कुल। एज वेल, ताकि यू गेटिंग टू स्पेंड टाइम। आई थिंक दैट्स ऑल्सो अगेन अ स्मार्ट ट्रिक टू थिंक अबाउट। अच्छा, एक मैं आपसे पूछूंगी कि चलिए ये तो छोटे छोटे चैलेंजेस भी आप बता रही हैं जो हुए, कोई फेलियर्स, स्पेशली जैसे आप बिजनेस जब करते हैं तो बिजनेस में ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं, कोई ऐसा फेलियर जो आप बताना चाहें एंड हाउ यू ओवरकेम दैट फेलियर? नहीं, failure तो नहीं, but challenge, yes. Very early in my career as a PR practitioner, जब हमने ये अपना कंपनी लॉन्च किया, तो आई थिंक इट वाज आवर फर्स्ट ईयर ओनली, एंड लकी वन मॉल का लॉन्च का हमें वो आया कि बिड करें आप, मेक अ प्रेजेंटेशन। एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों से आई थिंक लिया था, बहुत सी कंपनी से, शायद 40-50 कंपनी से लिया होगा, पता नहीं कितनों से लिया था, बट बहरहाल वो नैरो डाउन होते 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 हमें मिल गया। अब इसके ऊपर दिस वाज लाइक ऑलमोस्ट, आई थिंक हमारा जब फर्स्ट ईयर में ही था कि हमने उस पे काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इतना ह्यूज थिंग, दिस इज द बिगेस्ट मॉल इन ऑल ऑफ साउथ एशिया। तो उसकी लॉन्च के लिए ज़ाहिर है कि 6-8 महीने की तैयारी, और उसमें कोऑर्डिनेशन करना कि हम किसको बुलाएँगे, हम दुबई से एक्ट्स को बुला रहे थे, और बहुत सी चीज़ें थी। और वो सारी चीज़ें हमने उसको इन प्लेस करके, और सबको जो मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पूरा मिनट टू मिनट डिटेलिंग एंड एवरीथिंग। 3 days before it was going to open, the owners of Lucky One Mall called us, and there was an emergency meeting in the middle of the night, रात को 10 बजे, कि हम सोच रहे हैं कि हम इसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि उनका जो वो था, हाइपर मार्ट था जिसको खुलना था, वो उनका ना फ्रोजन सेक्शन नहीं तैयार हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू ऑल दीज इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज जिनके होते हैं, उनके लॉज होते हैं, यू कैन नॉट ओपन एन एंटायर हाइपर मार्ट विदाउट ऑल द सेक्शंस इन ऑपरेशन। तो विदाउट द फ्रोजन सेक्शन ओपनिंग वो खोल ही नहीं सकते थे। और रमजान वाज राउंड द कॉर्नर, तो उनका ये था कि अगर हम ये नहीं खोलेंगे, अगर खोल लिया हमने अगर मॉल, और ये वाला हाइपर मार्ट नहीं खुला होगा, तो फुटफॉल नहीं आएगा, बिकॉज पाकिस्तान में कोई मॉल नहीं खुलता है विदाउट हाइपर मार्ट। इज द फर्स्ट प्लेस दैट हैज टू ओपन अप। बाकी दुकानें खुलें या ना खुलें, उसका खुलना लाजमी है, तो क्योंकि सारा फुटफॉल उसी से जनरेट होता है। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मॉल खुल गया विदाउट हाइपर मार्ट। कराची में तो कभी भी नहीं खुला है। तो वो हमारे लिए तो इट विल बी सुसाइडल अगर हम अभी खोल लेंगे, क्योंकि वो अभी तैयार ही नहीं हो सकते, उनको कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे तैयार करने में। और उस वक्त फिर रमजान शुरू हो जाएगा। रमजान में फिर मॉल की ओपनिंग आप इस तरह ग्रैंड कर ही नहीं सकते, तो वो फिर रमजान के बाद करना। मैंने सोचा इतने इनके पैसे गए, इतना हार्ड वर्क, इतना सब कुछ इसमें चला गया है टू गेट ऑल दीज थिंग्स गोइंग, एंड नाउ एट दिस स्टेज टू से कि अच्छा ठीक है पोस्टपोन कर लेते हैं, तो वो तो फिर हो गई रमजान के बाद, देन इट्स टू लेट, इट विल लूज इट्स इंपैक्ट। वो एक महीने से अगर कोई चीज तो मैंने कहा कि सुने, आपका क्या है, व्हाट इज योर फियर? सेड माय फियर इज दैट देयर वोंट बी एनी फुटफॉल। मैंने कहा सपोजिंग वी गारंटी यू कि आपका फुटफॉल आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका मॉल नहीं खुला, हम उसमें इतनी एंटरटेनमेंट, इतनी एक्टिविटीज डाल देंगे कि लोग सिर्फ उसी के लिए आ जाएंगे, और ये सिर्फ मॉल को देखने के लिए इट्स सच अ ह्यूज थिंग। और उस साइड पे जहाँ वो खुला है वहां पे उस तरह का कोई बिल्कुल। नहीं है, वो एक सो फैसिनेटिंग। बहरहाल खूब हमने कुछ 2 घंटे मगजमारी करके फाइनली हमने कन्विंस कर दिया कि नहीं, लेट्स गो, जस्ट गो एज प्लान्ड, एंड अल्लाह मारे का हो जाएगा। वो मॉल की जब हमने ओपनिंग कर दी, हमने हमारा जो शुरू में जो प्रेजेंटेशन था वो 3 दिन का था कि फर्स्ट डे हम खोलेंगे फॉर इनवाइटीज, एंड सेकंड डे से वो जनरल पब्लिक के लिए खुलेगा, सेकंड एंड थर्ड डे एंड एक्टिविटीज हम वो करेंगे। इतना फुटफॉल आया उन 3 दिनों के अंदर कि दे मेड अस कंटिन्यू फॉर 13 days।
So Wow. Okay. एक्टिविटीज करते रहे और इतना मतलब I two of my son and another colleague stayed at Lucky One Mall for 13 days. They were staying there. वहाँ पे एक अपार्टमेंट है, वो लोग रात दिन वहीं रह रहे थे. सुबह सवेरे तो आ जाते थे तो पूरी रात तक. तो वो एक बहुत इनफैक्ट उसके बाद I got two to three international awards on the basis of this. एक New York में मिला twice in for startup of the year and then twice in San Francisco for this very project because it was something that was really a feather in our cap and a great achievement. So वो एक बहुत बड़ा challenge था जो अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत से हो गया. So that's a great story, right, of success. तो यहीं पे मैं next अपना question पूछती हूँ कि आपके लिए success का क्या मानी है? What is success for you? I think success for me is when my client comes to me and tells me that they are happy. When they come and they say that बहुत अच्छा हो गया, we are content. It doesn't matter whether they are paying me much, they're paying me less. It doesn't matter whether it's one day work or it's 1 year work. At the end of the day, you have to be content that you've done your best, and your client has to feel, and the people who are coming, to that event to say that yes, it's it's been done well. So for me, work related, this is my success. Otherwise, success in life, I think it's your own personal satisfaction. You should know that what you've put in your best in whatever you're doing, and you're successful. चाहे वो best may be falling short. अगर आपने अपना best कर लिया, that means I think you've been successful in doing what you want to do. अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे, दो चीज़ें मुझे पूछनी आपसे जो आपकी मैंने नोटिस की थी, बट एक पहला सवाल पहले ये पूछती हूँ कि आपने मेंशन किया कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, और फिर आपने मेंशन किया आई थिंक कि दूसरा जो आपका बिजनेस है वो सन इन लॉ के साथ है. काफ़ी दफ़ा फैमिलीज़ के साथ बिजनेस करना थोड़ा ट्रिकी भी होता है. सो इज़ देयर एनी एडवाइस फॉर एंटरप्रेन्योर्स दैट इफ दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट बिजनेस विद फैमिली मेम्बर्स, क्या क्या चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए, एंड हाउ कैन दे मेक श्योर कि जो नेगेटिव कभी एस्पेक्ट्स हों तो वो अराइज ना करें या मिनिमाइज हो जाए एटलीस्ट? Okay, so this business is not with my son-in-law; it's with my son and my daughter-in-law. Okay. But even having said that, I mean, you can have problems even with your own son. It's not that कि वो flesh and blood है तो problem नहीं होगी, और हुई भी है. I think because जो सबसे ज़्यादा जो conflict हो जाता है ना, वो ये होता है कि I'm talking to your boss or I'm talking to your mother. So some places where you get with a lot of things because you're the son. A lot of places where you have to follow rules because you're the employee also. So वो इस तरह के बहुत दफा issues इस तरह के create हुए हैं अब 5 साल में. मगर वो ये that you have to learn how to take each day as it comes and handle it and try and handle it to the best of your ability. It's in fact it's been easier for me to do it with my daughter-in-law who also works with me than it has been with my son because वो एक ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी होती है अपने बेटे के साथ और बेटे को माँ के साथ, तो वो बहुत सी चीजें वो कह देता है जिसमें फिर मैं गुस्से हो जाती हूँ कि भाई ये क्या है, I mean whatever it is, I'm your boss, you should be talking to me like this. तो ये but yeah, then you have to take it in your stride. Achha, because just last week I was asked by somebody and she said that she asked a few people about me and they said that I'm bossy apparently. So do you feel... And I said, maybe I am, I don't know. I said, yeah, probably because it's true. And then she said, oh, you're admitting it. So मैंने कहा, भाई, look, being an entrepreneur in any case, being a business owner, I think you have to be assertive. So I don't know, bossy कहना चाहते हो, bossy कह दो, I don't mind, right? However you... So आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में operate करने के लिए, do women have to, become more assertive, be more bossy? Perhaps some people like to phrase it, they develop certain traits which are more manly than, normally would be considered feminine. So what do you think? I've heard this very often that, because you're in a man's world, you have to behave in a certain way for you to be accepted. And in the corporate world, I think probably more so. That's why I also find that
a lot of times, you'll see women wearing pants and jacket in an environment where they're dealing with men all the time because they feel that if they're in shalwar kameez, they may not be taken so seriously. So एक वो इस तरह का general perception है. लेकिन I think basically your work speaks for yourself, and if you don't have to be bossy or assertive or aggressive in order to be able to make your presence felt. I think people start taking you seriously when they know that you know your work and you know what you're talking about. So, as long as they know they cannot fool you, they cannot वो सीधे चलते हैं. तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने अपने आप को अग्रेसिवली हैंडल करना है. हमारी छोटी सी ऑफिस है, बट वी हैव अ वेरी फैमिली एनवायरनमेंट, और छेड़छाड़ तो होती रहती है. हम अपने सबके बर्थडेज भी सेलिब्रेट होते हैं, केक्स भी करते हैं, लंचेस भी साथ होते हैं. बहुत दफा जो हमारे मेरे कोलीग्स है जो अब साल 2 साल से ज्यादा हो चुका होता है, तो वो भी फेमिलियर हो रहे होते हैं. सो बहुत सी दफा वो भी चीजें बोल रहे होते हैं, फिर मैं उनको बोलती हूँ, हाउ आर यू टॉकिंग टू मी? तो हो रही होती है. But the thing is that at the end of the day, they know that she knows what she's talking about, and that she's very particular. तो वो एक एक चीज पे वो देखेंगी और वो डबल चेक करेंगी. So they are okay with that because they know that at the end of the day it's going to benefit all of us if something is done. Absolutely. And also very important for their own growth as well. अगर उनको guide करते रहें throughout, so I think that's also important. अच्छा, ये बताएं, who's your inspiration? That's a difficult one. I don't know really. हाँ, मैं आपका आंसर कॉपी करने वाली थी क्योंकि मुझे भी ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है. बट इट कुड बी एनीबडी. इफ यू थिंक बैक, वाज इट योर ओन पेरेंट्स हु प्लेड अ वेरी, योर टीचर और somebody who was it that inspired you initially, or was it just self motivation? Yes, yeah. So I think there have been a lot of people in my life that have helped to mold me into what I am today. I don't know whether you can call that an inspiration per se, or whether they just sort of been there at the back of my mind that this is the way things have to be done. My mother was always a workaholic. I have never seen her sitting without doing something. अगर वो टीवी भी देख रही होती थी तो साथ वो क्रोशे कर रही होती थी, knitting कर रही होती थी. So I think that's something that I've subconsciously picked up from her. So I'm never sitting idle. I'm always doing something or the other. Even when I'm watching TV with my husband, we're always watching what he wants to watch, basically, because he loves to do binge watching and he loves to do channel surfing. तो वो जो भी वो देख रहे होते हैं, I'm sitting with my laptop और मैं अपना काम भी कर रही होती हूँ, टीवी भी देख रही होती हूँ, बातें भी कर रही होती हूँ. तो वो एक चीज है जो I think मैंने अम्मी से लिया. My father used to love writing, so I think that is something that I've inherited from him. Probably my first role model must have been Miss Fikri in school in St. Joseph's. She was my English literature and my geography teacher. And I remember that, I mean, she was not just my role model. I think हम जितने students जिनको उन्होंने पढ़ाया, I think वो सभी उनको role model समझते रहे हैं. और she's passed away, but an amazing person, and she was such a perfectionist. और इतनी वो छोटी छोटी चीजों पे वो इतना वो हमारा, I remember वो कभी भी टेस्ट हमारे का पेपर वापस नहीं आता था without red marks on every line. तो वो इतना हमने सीखा है the hard way कि how to do things properly, कि अब मैं बिल्कुल वही चीजें कर रही होती हूँ. क्योंकि मैं एडिटर भी हूँ तो वो बहुत frustrated होती हूँ when I see the carelessness with which things are submitted, because हम लोग इतने particular थे कि हमारे teachers इतने particular होते थे. And then I think later in my journalism career, Asif Saab, I've always said, has been my mentor, and he's another person who was very particular about how you should write articles and what you should use and what words to use where. None of the other editors really ever bothered, but he was very, very particular. So I learned a lot from him. And then after that, I think when I joined Hum Network, then both Sultan Appa and Dured Hassan, who is the CEO, I learned a lot from both of them on
I think leadership skills also, various things. And then, as I mentioned, JCs, उससे भी मैंने बहुत सी चीजें सीखी. So I think life is actually a learning experience, and the more you expose yourself to different kinds of people, the more you learn from them, and you pick up something or the other. So these are people who stand out, but I've learned a lot from a lot of people. It could be just anybody, but you pick up a lot. बिल्कुल, as long as you've got that learning attitude, अब तो वैसे भी every single day you have to learn new things. It's the बिल्कुल, requirement of the world that we live in. लेकिन particularly I think I want to request you कि young men and women को अगर आप guide करना चाहें कि कैसे उनको successful careers को navigate करना है, तो what would you offer to them? I think first of all, I would tell them to take themselves seriously and to take pride in their own work. What I find with youngsters nowadays is that they don't have pride in their work. Unka ye hota hai, they want to make quick money and they want to just do things and get it over with. And I think you can never be successful that way. जिस मैंने कहा कि आपको खुद मुतमईन होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है. मेरे पास जब वो चीजें आती थी ना एडिटिंग के लिए, तो मैं उनको फिर फोन करके मैं कहती थी कि ये क्या गार्बेज तुमने भेजा, हैव यू इवन बॉदर्ड टू रीड व्हाट यू सेंट मी? एंड दे वुड से बट यू आर द एडिटर, वी नो यू आर गोइंग टू एडिट, दैट्स व्हाई वी जस्ट सेंट इट. But that's not the right attitude. I used to also have editors I used to send my work to, but I used to edit my own piece 10 times before I sent it, because for me एक तौहीन की वो होता था कि अगर मुझे मेरे एडिटर मुझे कहे कि ये 10 मिस्टेक्स है इसमें, तो I would feel insulted. I would not want to be at that stage where I would have to be. I mean, obviously mistakes होती थी, मगर जानबूझ के to let things go कि ठीक है वो एडिटर कर लेगा, उसका काम है, ये क्या एटीट्यूड है? तो ये एटीट्यूड मैं देखती हूँ कि बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा है. एक चीज आप बताएं कि भाई उसमें आपको ये एडिट चाहिए, वो एक चीज एडिट होके आ जाएगी. देन यू टेल देम अगेन, भाई आपने ये इनकॉर्पोरेट किया, आपने ये नहीं इनकॉर्पोरेट किया, फिर वो दूसरी चीज इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. मतलब उस एक होलिस्टिकली आप सारी चीजें पूरा समझ के ठीक से क्यों नहीं दे सकते, मुझे नहीं समझ में आता. तो ये एटीट्यूड जो है ना कि बस हो जाएगा, चलता है, बेफिक्र हो जाए, ये दिस इज बॉदर द डेलाइट आउट ऑफ मी. My attitude is that, you have to be very professional. And I remember, when I was very young, हमारे ज़माने में autograph books होते थे, तो people used to write down things on it, words of advice, words of wisdom. And I remember that my father had written ages ago that when a task is once begun, never leave it till it's done. Be the labor big or small, do it well or not at all. And that has been honestly all my life. So I feel that if all these youngsters also follow this, they're on their own. Perfect. I think that's really well stated. मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं in addition to that. Next question पे आऊँगी because I noticed that you also do a lot of social work, I would call it, or whatever जो भी term आप कहना चाहती हैं. And Sinosa stood out because Sinosa is something that we've also supported through impacting lives in the past. So थोड़ा सा बताएंगी कि कैसे उसका time निकालती हैं, carve करती हैं, क्यों आपको लगता है कि ये important है, दुनियावी चीज़ों के साथ साथ ये वाले काम करना भी क्यों ज़रूरी है? Or what is your motivation? I mean, it's not necessarily that this is your motivation. It could just be that this is part and parcel and you want to do it. So what motivates you to do it and how do you find time for it? Okay, so I think देखिए टाइम आपको हमेशा निकालना पड़ता है. You never find time for anything. So whatever you feel about passionately about, you take out time for that. For me, it's social work, if you may call it. Basically, my passion is to try and leave. Now, this may sound very sort of grandiose, but I feel that I want to leave the world a better place by having been there. And if I can contribute in any small way, even if it is by giving a lecture to a person who's in the lift and who's gone in without the mask on, or if it's somebody who I feel throwing trash on the road, and I will do that, much to the chagrin and embarrassment of my kids if they're with me. Mama, kya kar rahi hai? But I will always tell them. ये मेरी अम्मी भी करती हैं. So I feel Yes. कि मैं थोड़ा बहुत तो कम से कम जो भी one bit of effort कर लूँ to try and improve the environment or the situation. So and मेरे पास, as I said,
मैंने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया कोई जगह जाने के लिए, वो चीजें मेरे पास खुद ब खुद आती चली गई हैं। और जब आती हैं तो मैं ना मना कर सकती हूँ, बल्कि आई स्ट्रांगली फील दैट doors open, opportunities are provided. If you don't open the door and take that opportunity, somebody else will. So मेरा तो एटीट्यूड ये है कि आप when opportunity knocks, open the door. मैं चाहे वो किसी और को हेल्प करने के लिए, चाहे वो अपने आप को हेल्प करने के लिए, जो भी है। जब मैंने हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मैं 2000 से मैं वाबस्ता हूँ, एंड हेरिटेज फाउंडेशन में मैं भी यास्मीन लारी को भी इंटरव्यू करने गई थी फॉर स्टार वीकेंड, एंड एट दैट टाइम शी वाज स्टार्टिंग दिस कारवान कराची के नाम से एक मुहिम चलाने शुरू कर रही थी वो, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हेरिटेज इन कराची। एंड वो मुझे जब मैंने उनको इंटरव्यू किया, मैं इतनी इंस्पायर्ड हुई, इतनी मोटिवेटेड हुई कि इनफैक्ट आई शुड हैव मेंशन्ड हर एज वन ऑफ द पीपल हु आल्सो इंस्पायर्ड मी इन माय लाइफ, बिकॉज शी इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। एंड जब मैंने उनसे इतना कुछ सीखा, और आई वाज सो इंस्पायर्ड दैट आई promptly joined her heritage foundation. And again, lots of people were there before me, lots of people left, but the two of us have been there from the beginning till the end. अभी तक हम लगे हुए हैं। और because of that मैंने बहुत काम किया। शुरू तो हेरिटेज के हवाले से हुआ, लेकिन फिर हमने नॉर्दर्न एरियाज में जब अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ फॉर ऑल द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो वहाँ पर भी मैं साथ गई, वहाँ पे भी हमने काम किया। फ्लड्स आए सिंध में, वहाँ पे भी रिहैबिलिटेशन का काम, और मड हाउसेस एंड ऑल सबके लिए उनके लिए बनाना। इंटीरियर सिंध में वहाँ उनके साथ काम किया। कराची में तो हम करते ही रहे, स्कूलों के बच्चों के साथ, गवर्नमेंट स्कूल्स, कम्युनिटी स्कूल्स, विमेन, बहुत मुख्तलिफ नौयत की चीज़ें, और उससे बहुत सी चीज़ें मुझे करने मिली जो मैं शायद कभी भी नहीं कर पाती। जैसे मैं लाहौर फोर्ट में मैं रही हूँ, जाकर how many people can say they've stayed at the Lahore fort? I stayed there for a week because of Can I the tell you, I'm really jealous, by the way. so telling you. So Lahore Fort is gorgeous. can you imagine? So I stayed there because we were doing conservation work there, and then we were doing cleanliness drive, and we had school children who came and performed there. I had dinner at the Noor Mahal with her, in Bhavalpur. We cleaned the Havar Fort. So lots of things that I've done, which I've been passionate about because I want to do it, and ये एक opportunity आई मैंने ले ली। उसी तरह साइनोसा जो है, it's a school for since you've already associated, you already know that it's for Down syndrome children, but the earliest school that was established in Pakistan for this. And the person who founded it is a very close family, but he was an uncle, not really a friend, but जानने वाले बहुत ही हमारे करीब family friends. And so we've been associated with it for a very, very long time, and even in JCs and all, we had done fundraising for them. And then when I became with the Rotary, so again we did fundraising for them because I know it's a genuine cause and it's something that's really supported, And so whenever we can, we are constantly doing things to support it. So usi tarah, there are lots of other causes that we associated myself with, which I feel that they're genuine, and a lot of times they have approached us. हो जाता है कि वो बस things just वो कहते हैं ना कि क्या वो एक कुछ लिया और कारवान बनता ही चला गया, तो वो बस इसी तरह का वो एक होता है कि चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं, आपने ले लिया और वो चीजें चल पड़ती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज दैट आई अभी ये जो पूरा मैरियट रोड का जो अब हमने पेडेस्ट्रियनाइजेशन ऑफ मैरियट रोड जो किया है वो बिकॉज एक तो मैं I'm involved in it in multiple ways because I'm a director of Heritage Foundation, so I've been working with Yasmin closely on the pedestrianization of that street. Because of the Rotary Club, I took it up as a project for Rotary also to try and help out in whichever way we can for Denzol and for Marriott Road. And then Starlinks, जो मेरी company है, we do a lot of pro bono activities. तो उसमें हम Heritage Foundation के लिए हमेशा कुछ ना कुछ pro bono करते रहते हैं। तो so then again we are involved with that. So इस तरह की चीजें होती जाती हैं, काम आता रहता है, करते रहते हैं।
That's it's very simple. I don't think I go proactively. I don't go looking for things. They just come to me and I take it up. एंड आई थिंक ये बहुत ही जो था ना पता नहीं somebody said it to me once that इंसान को ना अपने आप को एक वेसल की तरह देखना चाहिए so if you're like a vessel and you treat yourself like a vessel so what happens is the more water that keeps coming you have to keep pouring it out ताकि आपके अंदर और पानी आ सके right आपने कहीं and the more you channel that wisdom or that help or that support or whatever you're doing the more it'll come to you right and that's really when you become a connector for instance the people come to you again and again with opportunities to share ahead. So you're always at the hub of information. You know everything that's going on, right? And you get connected with so many different people. So I think you're absolutely right. कि कदम उठाते हैं तो बहुत सारी और चीजें होती हैं, which are you don't even know. Okay, so let me ask you my final question because I know कि हमने बहुत ज़्यादा आपका time लिया है. What message would you like to leave your audience with? I think never lose hope, number one. And number two is that what is my motto in life is that life is too short to be ordinary. So I would tell everybody to live your life like it's your last day, live it to the fullest, and do whatever you can to leave the world a better place. आजकल तो हालात ऐसे हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है एक मिनट you're there in the next minute you hear कि किसी को COVID हो गया and that person is gone and we've lost so many people near India. So I think the thing is just to live life to your fullest while you can. Thank you so much. Thank you very, very much for making time. Thank you. It was a pleasure. Likewise. All right. So, Shanaz Appa, I don't know if I can call you that or not, but I'm just going to say it right now. So, thank you very, very much for sharing your story, sharing so many different anecdotes. I think it was really, really useful. बहुत ही practical और बहुत ही, relevant advice थी for women, for entrepreneurs, for people who are just generally in life trying to do things, right? And like she said, you have to think about leaving the world a better place. I think that's a very beautiful message that I'll end with. So, over and out, and inshallah, see you guys soon.